इंसानी जस्तजू के 9वें भाग में सबका स्वागत है। गुरुजी की कृपा से ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इस एपिसोड में है गुरुजी दे पंज प्यारे। And there is a new flavor to this episode because we'll have a new host and a new participant as well. So without any further ado, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए मैं शुरू करना चाहूंगी आज का ये एपिसोड with a question that is an open question for everybody. And what pops up in my mind is the thought that we all in some ways we like to believe कि हम गुरुजी से को बहुत चाहते हैं, right? मैं सुनना चाहूंगी सबसे कि हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है कि गुरुजी हम सबसे क्या चाहते हैं. So I would like to pass that on to Anita auntie to take over this conversation with this question. Welcome and welcome Archana auntie. Thank you. Welcome, everyone. So wonderful to be back. Aarti, that's a very pivotal question because we all feel we're very close to Guruji, and then we all, of course, are looking in the same direction. The path is maybe varies, like we all say, the connection is our own individual connection. And what he wants from us is very simple. He literally wants simplicity and for us to have a spiritual bend of mind, which means our value system. Changa bano, insan bano, like he used to say, simplicity mein raho, be compassionate, be humble, nivyanu fal lagda, daya rakho manch, jide andar daya nahi hai, aur rab ko lo waise hi dur ho jata hai. So they are very basic, fundamental teachings, which we probably learned as a child from our parents. Somewhere we grew up. And when we grew up, Kalyu ki hawa lag gayi hame, and we forgot. We became oblivious to what really matters. We became so distracted. In these days of distraction, in this world of many, many distractions, now it's become a challenge to streamline those values. Like Guruji said, bada mara time aa raha ke badi distractions honi hai. Itni distractions hai कि now it's actually become a challenge to streamline ourselves, And so I think what he wants from us is simplicity and spirituality. That your value system is what counts at the end of the day, and that's your true religion. Humanity, being humane is your true religion. Be kind to every kind is your true religion. कहते सी मैं तुहाडे वहम और अहम तो दूर करना आया. Rituals which रब नहीं है. मंदिरां विच तो ना रब बैठे होंदे ने. मन ही मंदिर. तो मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. मन साफ रखो. एक दूसरे वास्ते भी साफ रखो. जब गुरुजी ने हमें जज नहीं किया कभी, कौन होता है किसी को जज करने वाले? तो इसलिए सबके साथ अच्छा रहो और अपनी जुबान कभी गंदा ना करो, निंदा ना करो, किसी का बुरा ना करो. कहते से चंगा नहीं कर सकते थे मारा भी ना करो, चंगा बोल नहीं सकते थे मारा भी ना बोलो. एक चुप सौ सुख. आपका क्या ख्याल है जोशी आंटी? आप भी थोड़ा सा इलाबरेट करके बोलिए. बिल्कुल आपने सही कहा. आप सभी का स्वागत है. बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ. गुरुजी की तो लर्निंग ही ये थी कि चंगा इंसान बनो. सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि चंगा बंदा बन. चंगा बंदा बनने से एक शब्द से ही हमें सारी चीजें आ जाती हैं उसमें. या सत्य बोलना या अपनी राह पे चलना, सिर्फ एक चंगा बंदा कहने मात्र से गुरुजी ने वो, जैसे मेरे बेटे के बाल एक बार बहुत लंबे लंबे इसने किए हुए थे, छोटे बेटे ने मेरे, और वो चुपके चुपके इधर उधर इधर उधर घूमता फिरता था कि गुरुजी ना देख लें, अभी कह देंगे कि बाल कटवा ले. काफी बड़े बड़े. गुरुजी को सब मालूम था. वो जिधर म्यूजिक सिस्टम होता है उधर बैठ चुपके खड़ा हो गया, और उसको गुरुजी ने देखा उधर कनेक्शन से. जैसे ही कमरे से बाहर निकले, चलो कल को बाल कटा के आओ, बंदा बनो, बंदा बन जा, ऐसे बोला. और नेक्स्ट डे उसने आई मीन उनके कहने मात्र से, उनके सिर्फ इतना भर कहने भर से हम सुधर जाते हैं. तो अब जैसे आरती ने बोला कि वो आपसे क्या चाहते हैं, गुरुजी ने यही तो टीचिंग ही दी है हमें ना, कि हम नीवे बन के रहें और ना करें, दूसरों को
की यही निंदा चुगली ना करें और सच्ची राह पे चलें। सच्ची राह पे चलेंगे, अपने घर से ही शुरुआत करो, कहीं बाहर जा कोई ऐसे सच्ची राह नहीं करनी है। बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को, अपने पोता पोती को, वो जो गुरु जी की ही टीचिंग तो हम उनको सिखा रहे हैं। रोजाना आके गुरु जी के आगे आगे प्रणाम करना, स्कूल जाने से पहले प्रसाद लेके जाना, वो किसी भी लालच में आए लेकिन गुरु जी को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। ये टीचिंग हम गुरु जी की ही सिखाई हुई टीचिंग हम उनको दे रहे हैं ना। तो गुरु जी के तो शब्द ही इतने, एक एक चीज, जैसे हम सभी, आपने बोला जैसे कि मन चंगा हुए तो नल के दा पानी भी जिंदा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। गुरु जी आपके अंदर हैं, गुरु जी आपके साथ हैं। बस अपना अपना कनेक्शन है, वो आप उनसे जुड़ के रखिए और उनको अपने साथ हमेशा महसूस करिए, तो वो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ जी। अर्चना जी, आपके लिए ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है? शुक्राना आपके लिए क्या मायने रखता है? जोशी आंटी, आपके लिए मैं बाद में बात करूंगी। सॉरी, अर्चना आंटी के लिए। अर्चना आंटी, आपके लिए व्हाट डज ग्रैटिट्यूड मीन टू यू? शुक्राना का क्या मतलब आपके लिए? हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस वर्ड? जय जी टू एवरीवन, प्यारी संगत जी, एंड सबसे पहले तो गुरु जी महाराज, हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के परम पावन दरबार में सबका स्वागत है, जो अभी हैं और जो बाद में सुनेंगे उनका भी। एंड ब्यूटीफुल जिक्र, as I would say, this is no धर्म चर्चा, this is no discussion. गुरु जी said discussion नाल रब नहीं मिलता। So ये लेकिन एक जिक्र है उनका, जैसे कि ये तेरा जिक्र है कि इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो ये उस तरह का उनका जिक्र है। तो इस रूहानी जिक्र में भी सबका स्वागत है। ये जो हम आपस में कर रहे हैं, ये गुरु जी की मर्जी है, बिकॉज आई बिलीव ही इज द ओनली डूअर। एंड बैक टू जोशी आंटीज अ लिटिल बिट, आई कम बैक टू यू अनीता आंटी in a bit. Joshi aunty, definitely, I totally agree. We are all on the same page here. But at the same time, I beg to differ a little bit. I'm little bit deviating here because being from psychology background also, when I entered Guruji's Darbar, I was what, 27, 28 years old in 2003. And the first thing came into my mind was, there's no preaching going on here. This is so unlike any other Baba or Guru. I had a background in Kriya Yoga, so I had this kind of, knowledge that there are gurus who preach, there are gurus who teaches yoga or something or samadhi. Here, Guruji doesn't say a word, and still people are getting blessed and healed, and their inner transformation is being taken place. That was my eye opener. And there is a phenomena called learned helplessness. This is not learned helplessness when we say he's the only doer, we are not doing anything. So same way, the surrender, the key for me was this: if Guruji wants you to do certain karma or certain thing, he'll make you do, don't worry about it. मेरे लिए यही था, अगर मुझे किसी के साथ में कुछ एक्सचेंज करना है कर्मास का, तो गुरुजी will make me do. And it's not that I'm just saying because I'm being lazy or I'm being inactive. No, because I have surrendered. I don't know, मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, बहुत बच्ची अपने आप को समझती हूँ इस फील्ड में, इस पाथ पे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है, why worry, गुरुजी इज देयर ना। वो तो अपने आप हाथ पकड़ के हम लोग को चला रहे हैं इस पाथ पे, हम थोड़ी चल रहे हैं। तो दिस सरेंडर थिंग वाज माय कीवर्ड। And back to Anita auntie's question to me, gratitude, of course gratitude. जो उन्होंने बुला लिया अपने पास में, इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा इस दुनिया में, इस जन्म में, इतनी सारी जिंदगियों में। गुरुजी हिमसेल्फ सेड, तुसी नहीं जानते हो कितने जन्मों की तपस्या लगती है तब तुम मेरे सामने आते हो। तो सामने आने दिया हम जैसे लोगों को, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? What else can you ask for? So for me, gratitude is only कि गुरुजी ने बुला लिया, that's all. मुझे इससे ज्यादा पता ही नहीं है कि शुक्राने का मतलब क्या होता है, किस चीज का करूं, किस चीज का करूं। बस अपने पास बुला लिया, that's it. You have come to me, now go sleep, go home and sleep, that's it.
your job is done here. Guruji, thank you so much. Shukrana for me is this. Thank you. Thank you, Anita Auntie, for your question. Aarti, can you and I come in conversation here? Because I think we will totally resonate. Aarti, are you there? Yes, I am here. So, So, you know, your question around gratitude, right? To me, Auntie, gratitude is, first of all, realizing and accepting the fact that anything and everything that's happening in my life, in me, around me, is exactly how it's supposed to happen. I may like it, I may not like it, I may agree, I may disagree, but it starts with realization and accepting things as they come, and then finding the strength in me. जैसे कहते हैं ना कि we always use this line कि गुरुजी जो मर्जी हो जाए शुक्राने जोगा रखना. Yeah, तो वो that शुक्राना जोगा जो गुरुजी बनाते हैं ना, yeah, चाहे लाइफ में धो धो के जो मर्जी पड़ जाए छितर, yeah, लेकिन शुक्राने जोगा जब गुरुजी रखते हैं, yeah, to me that is immense gratitude. And Karam Yoga and surrender, a very delicate balance, right? yeah, Surrender doesn't mean that we start to wash off our hands from our karams, because we have to take accountability and we have to take responsibility for the things that we are doing. And I do believe that, yes, Guruji does put you in situations where he wants your karmas to get expiated. But our intent matters, because it's like a cycle, right? The intent leads to action, action leads to karma. Karma leads to we attracting the degree of his bliss. mm, And then, it's like a full circle. yeah, So gratitude for the fact that we are on this path, yeah, we're on this journey, we're part of a so-called classroom mm, at whatever level, at whatever grade level we are in. So, this is my favorite line, and I will say it again. We are because he is. yeah. Nicely said. Lovely, Aarti. So, if I may elaborate, Guruji used to say, "मैं practical guru हूं." Mhm. And again, going back to what he wanted from us, he definitely wanted surrenders added to that: simplicity, spirituality, and surrender. The 3 S's. Yes. There were certain teachings which he used to say, no discourses, but he used to say, "Nivyanu fal lagda, manoi changa te nalkida pani." We've heard these words and said from him, so they are etched in our minds. And now, because he's a practical, I think he's made his every devotee a very practical devotee, because we're embracing his teachings. So for me, one, gratitude means, so for every moment is gratitude. It's an attitude for me. If a cup of tea comes in front of me, the first thing I say in my mind, in my heart, is thank you, Guruji, for this. If I'm allowed to travel and be on a flight and I'm comfortable or not, I say thank you, Guruji, for this. So thank you every moment. When you become grateful for every morsel and every molecule of your life, the universe is ready. And what is the universe? Guruji, the energy. It gives you abundantly. So to be aware of every moment and to be grateful every moment, for me, that is Shukrana. Shukrana Right. to be here. Shukrana to even be like, sitting here with you. Beautiful souls. That is being aware and not being in a complaint mode. Even the awareness that when the mind does turn into negative elements, to bring it back. That is gratitude. When we can make that shift. So he's given us so much awareness and education and intellect, to live our best lives. Because see, God help those who help themselves. You, like you said, you can't be complacent in the realm of spirituality. Guruji is there, but you have to take that one step towards him for him to take 1,000 towards you. There is no room for complacency, right? Absolutely. So I do have if I may, Auntie,
we've been using this line a lot, Nivyanu fal lagde, and to your point, Yeah. we hear that a lot, and this question maybe is directed towards Usha auntie. I still feel personally that amongst all the vices, the so-called vices, ego, Yeah. ahem, is the biggest thing I think that we find ourselves grappling with, because many a times in life you are placed in a situation where our default response is to respond via ego. एंड हमें छोटी छोटी चीजों पे हो सकता है गुस्सा आ जाए या मायूसी हो जाए या डिसअपॉइंटमेंट हो जाए कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ कैन दे टॉक लाइक दैट अबाउट मी, और this used to be mine, or whatever. I feel like degrees vary, but we all have that somewhere in us. Ushanti, how do you overcome this situation, and what's the advice you would want to give to the fellow sangat, because I feel like ego is the hardest to rid ourselves from. What would you like to say about that? Hey, Guruji. Thank you, Aarti, for asking such a difficult question, but I'll try my best with Guruji's help and his prompting. Actually, what you had said, it always surfaces once in a while. Nobody is without ego. It depends on the intensity, and it happens to the best of us. And actually, we should not beat us up for that, because the more you try to focus, nahi, mujhe nahi aana hai, mujhe ego nahi aana hai, the more it will creep up. So for me, practically, jo main apne saath, I'll try to speak more in Hindi so more of the people can understand, whoever would be seeing this, so it will be helpful. Mujhe lagta hai ki it is your innate nature. Sometimes people are born like that. जो जन्मों से, I don't know what causes it, and sometimes किसी को जन्मों से react करने की आदत होती है, which is very hard to get away from it. This is where Guru Kripa comes. आपको जब गुरु मिलते हैं, the first thing he does in silence, जो हमें पता भी नहीं रहता है, वो धीरे धीरे जो हमारे जो 5 चोट और ईगो सबसे बड़ा वाला होता है, इसीलिए गुरुजी कहते थे अपने जूते और चप्पल जहां उतारते हो वहां ईगो उतार के आओ. ईगो का स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जीवन में कोई भी मायने नहीं है. एंड आई वुड गिव एन एग्जाम्पल कि जैसे एक बचपन में एक लूडो का गेम होता था, स्नेक्स एंड लैडर, और हम खेलते थे, और उसी तरह से जब हम अपनी गुरु से जुड़ते हैं और जब मेडिटेट करते हैं और जब प्यूरिफाई करते हैं अपने को बहुत समय लगा करके, and get all the good things like forgiveness and treating everybody equal, वो चीजें करते हैं, हम एक स्टेट पर पहुंच जाते हैं, एक लैडर से ऊपर पहुंच जाते हैं, और फिर अचानक ही कुछ स्नेक आता है, वो डंक लगता है, किसी ने कुछ कह दिया. उस समय how we react, and most of us react intensely. गुस्से पर काबू नहीं रहता है, right away बोल देते हैं. So that is the turning point, how to avoid that situation, which has helped me. And as we grow in Sangat, and as you know, like at Edison Mandir or yahan Seattle mein jo ho raha hai, when you interact with a lot of different types of people, you're good if you stay home, that's fine, but when you are in the world, practically sabke saath tarah tarah ke log, tarah tarah ki egos, that is your testing time. And what has helped me is that जैसे कोई आके किसी ने कुछ कहा आपसे, and you want to react because you know it is so wrong, smile is the only weapon, and you have to remind yourself and keep saying Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji.
help me, Guruji, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. And then you will smile more. And with that smile, slowly, your reaction will be much, much different. So with dealing with people in Sangat itself, because, Sangat is all different, like the world, jungle, not everybody is in the same path, not everybody is in the same understanding with Guruji. इतने marketing हो रहा है, इतना networking हो रहा है, इतना वो हो रहा है, how to handle all this and still keep saying and still not to react. But when the time comes for Guruji's Garima, you have to take a stand. You have to react. उस समय ईगो का कोई काम नहीं है. अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, you have to raise your voice. You have to tell people this is totally not acceptable. So you have to choose your words, how you have to handle the situation. So for me, this is how it has helped me. And actually, without Guru Kripa, no matter how much we do, it is just not possible. I hope agree. I have answered. Yeah, and I do believe, and I'm sure Anita Auntie will agree here, that Guruji will keep creating the same situations for you till your soul actually learns the lesson it is supposed to. Yeah. We can keep framing and reframing our responses, but जब तक just कहते हैं ना, जो हमारी सोल को सीख मिलनी है, जब तक हम वो नहीं लेते, those situations will keep manifesting themselves, and it's hard. I think not even just the same situation, the same life, you have to come back to learn the lesson till you get it. God, I don't want that. We sound very philosophical right now. Sorry to intervene. Guruji had a very good sense of humor, and उसी से related एक छोटा सा small सत्संग है. एक आंटी थी, I won't name, of course. तोबा, no naming here, but we all know them, and the politician. And she used to come, and she was full of ego, full of head to bottom, like top to bottom, head to toe, and she never used to even talk to anyone. She never used to even partake the langar prasad, okay, with 3 people. What Guruji did, slowly and gradually, sweetly, kindly, killing with kindness, sweetly, subtle way में गुरुजी ने उनका ईगो खत्म ऐसा किया कि अब वो लंगर के बर्तन उठा के ले जाती थी और जाके बर्तन किचन में रखती थी, उनसे प्लेटें उठवानी शुरू की लंगर की. That's how she gotten rid of her ego. And and she didn't even realize that Guruji is doing it to her. Like, it was so subtle, the inner transformation. And within no time, she was totally a different person altogether. So that's how Guruji works. He doesn't even let you realize, doesn't even let you go through the hard path, the difficult path. But everything is just being done for you. Everything is just being in favor of you. See, I remember Ramakrishna Paramhans' ego. Speaking of ego, he had very long hair. To get rid of his last bit of ego, what he did, he started washing the toilets of those poor people with his hair. That level is very difficult to achieve because they are Paramhans. We are mortal human beings. All we can do, pray to Guruji. क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि ईगो नहीं करना, वो भी हमारा ईगो ही बोल रहा है. It's not us talking. That's our ego talking. कि हमें ईगो नहीं करना. So only Guruji. Just ईगो भी उनके छੱਡ दो, surrender कर दो. He will take care of the ego also, as I said, for that auntie. So yeah. Please go ahead. Sorry. No, I got a bit emotional. We'll hand it back to Anita Auntie. So Joshi Auntie, you tell us something humorous about Guruji, something light, something relatable to life and everyday situations, which आपकी याद में हो. याद में तो बहुत कुछ है अनिता जी. मैं इसमें जो ये अभी ईगो की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा बोलूंगी. Please. एक शब्द आता है, हमेशा सुनवाते थे गुरुजी. कहते थे जैसे कि आत्मा के लिए अपने
हमारी एक खुराक होती है शब्द सुनना और ये सब सुनना, Yeah. भजन की सुनना, वो अ, हमारी एक रूह के लिए खुराक है वो हमारी। और जो ईगो है वो सब चीजों को एक क्षण में नष्ट कर देती है। ईगो जो है वो हमारे जो जो हमने खटिया है जितना कुछ, उसको सेकंड्स में खत्म कर देती है। Right, right. तो आंटी अभी कह रही थी कि गुरु कृपा सबसे जरूरी है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप ना ही मुंह से बोलिए कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, या जूतों के साथ छोड़ो या वो, लेकिन वो जरूरी है कि ये सब करना, गुरु जी की बात मानना, लेकिन गुरु कृपा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर गुरु कृपा करे तो हर चीज संभव है। बिल्कुल, लवली। आप ये इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? मन्नो मंगो ने, गुरुजी बहुत बोलते थे ये कि मन्नो मंगो ने। आप ट्रांसलेट कीजिए जोशी आंटी, आपके क्या और गुरु जी की मांगो नहीं, क्यों क्यों बोलते थे वो? अब आपको भी तो मालूम है, देखिए वो तो घट घट वासी हैं, वो तो हर के मन की जानते हैं, उनको कहने की क्या जरूरत है? माँ को, जब माँ कुछ खाना खिलाती है अपने बच्चे को, उसको पता होता है कि इसके टाइम, हम लोग टाइम देखते हैं, उसको दूध का टाइम हो गया, इसका स्कूल जाने का टाइम हो गया, इसको ये देना है, उसको वो देना, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, ऐसे ऐसे चुटकी में काम होता है सारा। वो तो सर्वश्रेष्ठा है, वो तो प्रभु हैं, वो तो संसार के मालिक है, वो तो सब कुछ पता है क्या हो रहा है। उनसे मांगने की, कहने की क्या जरूरत? हम लोग तो पापी और स्वार्थी हैं। हम लोग में पेशेंस नहीं है, हमारे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। कितना ही हम समझ लें, बूझ लें कि ये कहा गुरुजी ने ये किया, फिर भी हम जो है वो उन छोटी छोटी चीजों के पीछे लगे रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे यहाँ जाना है, अब उसको लेट हो गया, वो क्यों नहीं आया घर। हम इतना सब मुंह से बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। जो छोड़ने वाली चीज है वो गुरु जी से कहना चाहिए, वो गुरु जी क्या, इसीलिए गुरु जी हमेशा सिखाया भी करते थे हमको, यही सब कह कह के कि बार बार अगर सोचोगे, कहोगे अपने मन से कि गुरु जी ने हमें ये सिखाया है, तो शायद हम कुछ सुधर जाए। तो और मांगना तो इसीलिए है ही नहीं क्योंकि उनको तो सब पता है, जो हमें नहीं भी चाहिए वो भी उनको पता है, और जो कब चाहिए वो भी पता है, तो फिर उनसे मांगने की क्या जरूरत आंटी एक है? शेर मुझे पता है उसको कि Sorry, यस let her finish, है ना? Let her finish, please. गो अहेड। हाँ जी अर्चना, क्या बोल रहे हो आप? शेर याद आता है, करता है क्यों हुजूर से तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उस पे कहे बगैर। अच्छा, वाह। तो जब उनको सब पता ही है तो उनसे बोलना क्या। प्लीज गो अहेड, प्लीज अनीता आंटी गो अहेड। Thank you. Aarti, please elaborate and give your interpretation, darling. Mango nahi manno. That's a tough one, and there are two facets to this. Okay. एक जो मेरे जहन में आता है is one के अगर औलाद अपने माँ बाप से नहीं डिमांड करेगी तो किससे करेगी? दूसरा, टू लीला आंटीज पॉइंट कि माँ बाप से क्या मांगने की जरूरत है, उनको तो सब पता है. So I think the answer, in my humble opinion, lies somewhere in the middle. And then explain that. I feel like it's tied to intent again. अगर मैं गुरु साहिब से ये मांगती हूँ कि गुरुजी आप मुझे हेल्थ बख्शिए, Yes, yes. ताकि मैं आपको याद कर सकूं, क्योंकि जब मेरे को दर्द होता है मेरा ध्यान उस दर्द पे चला जाता है और आपसे हट जाता है. Beautiful. मुझे लगता है मेरी मांग जायज है. Yes, yes. लेकिन अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरा ये घर छोटा है, मुझे थोड़ा और बड़ा दे दो, Yes, yes, yes. तो Absolutely. again it's very nuanced. Yes, very new. You know, it depends on कि आपकी मांग के पीछे आपकी इंटेंट क्या है और But आप उस मांग से क्या खटना चाहते हो. yes, That's the answer in my view. yes. Beautiful. Very well explained. यहाँ पर मैं जस्ट बोलो कि एक बच्चा माँ से या बाप अपने पिता से कुछ भी मांगता है,
लेकिन क्यों मांगे? क्योंकि उनको पता है। बट माँ बाप को भी पता है कि वो चीज बच्चे को कब चाहिए। वो Yeah. 2 साल 3 साल का बच्चा घड़ी मांगे या फोन मांगे तो वो आप नहीं दे देंगे माँ बाप उसको। Right. वो उस समय देंगे जब उसका टाइम आ जाएगा, जब Exactly. जरूरत महसूस होगी। Time. हम्म, Yeah. Time. हमारे टाइम भी पता है। Yeah. ये सब भी कहने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चा है उसको संभालो। उनके तो इतने करोड़ों बच्चे हैं, वो तो हर एक की जानते हैं और हर एक का टाइम भी जानते हैं वो। तो आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि आप जैसे कह रहे हो कि हमारा ध्यान, वो ध्यान भी देखो। अ, जैसे मैं बहुत बारी हम सोचती भी हूँ मैं कभी कभी ये चीज। जैसे अब हमारे ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, आज कमर हो रहा है, ये हो रहा है। इतने साल हम गुरु जी के शरण में, अभी जब उनकी प्रेजेंस में, जब उनके सशरीर, जब हम उनके साथ थे, आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह से उठ के और रात के वही 2 बजे तक कंटिन्यूस हम सेवा में कुछ न कुछ होते थे। जो भी था, घर से निकल जाते थे, रात को आते थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर वही शुरू हो जाता था। और वो चीज सालों साल रही। तब तक हमें कोई दर्द या कोई एक या कोई चींटी काटना भी नहीं पता लगा। क्यों? क्योंकि हम उस तरफ ध्यान ही हमारा नहीं था। तो हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते थे कि सिर दर्द हो रहा है, गुरु जी से दवाई मांगनी है, गुरु जी हमारी हेल्थ ठीक करो। हमारा ध्यान ही अपने उस नहीं था। हमारा एक फोकस होता था सिर्फ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। अब हम भटक गए हैं। अब हम और तरफ देखने लगे हैं। हम हम्म, अपने गुरु के जो कहीं जाए तो वहां पे क्या पहना है, क्या सजावट है, क्या वो है, गुरु जी के हम्म, लिए, गुरु जी को हम देखते ही नहीं। गुरु जी के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो चीज जब आपके तरफ से नहीं जाएगी तो गुरु जी की तरफ से कैसे हो जाएगी? आप उनसे कैसे कह दोगे कि हमें ये दे दो, वो दे दो? और हेल्थ के लिए जहां आप जैसे कह रहे हो, वो भी उनको मालूम है, वो भी आपको मालूम है कि आपकी कोई दर्द या कोई बुखार, या वो आपका कौन सा कर्म उस चीज से काट रहे हैं। True. गुरु जी कि मैंने 10% मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, वो 90 तो मैं खुद काट देता हूँ। क्या पता हम्म, वो ये चीज आपकी कटवा के, और गुरु जी आपके और कर्म सारे मिटाने के लिए वो सब आपको दर्द दे रहे हो। उस समय भी आपको, जैसे शांति बोल रहे थे, उस समय भी आपको सिमरन करना चाहिए। उस समय भी आपको ये बोलना चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दर्दी तो है, गुरुजी ने दिया है तो मैं सह लूं। Yeah. so उस समय वो सहन शक्ति भी, like auntie you said, comes through Guru Kripa, right? But that Guru Kripa is also related to your own past karmas. Why your Guruji chooses you, why he brings you in front of him, at what stage, for what reason is best known to him. But I feel like there's this karmic cycle that invokes the extent and the degree of this, right? I'm curious to hear your thoughts as well, Ushanti. Actually, to tell you the truth, in the beginning, when we used to come from Singapore, I had a big list. I had no concept of Guru. I just thought we have just hit a jackpot. मेरी बेटी को ठीक किया. Now in my mind, I had this list कि अब गुरु जी से ये बात करेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे. That's all I was thinking about. And this happened for some time, maybe a year. And the day came that Guruji told me right away कि आज के बाद तू मेरे से कुछ ना मांगना. आज के बाद मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है. And I started crying. I said, Guruji, आपसे नहीं मांगे कि किससे मांगेंगे? मैं कहीं और नहीं जाती हूँ, मैं केवल आपको ही मानती हूँ. एंड गुरुजी सेड कि आज के बाद मेरे से बात नहीं करना. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई थॉट अब मेरा टाइम आ गया, गुरुजी कहीं मुझे बैन ना कर दें. मुझे इस बात से बहुत डर लगता था, मैं तो मर जाऊंगी, मैं गुरुजी को देखे बिना नहीं रह सकती हूँ. एंड गुरुजी एट दैट टाइम टोल्ड मी कि तू मेरे से टेलीपैथी से बात कर सकती है. I had no idea about telepathy. And then he said, I said, Guruji, I don't know. Kaise? And then he said, his words were,
जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा. So that was the big window for me. I thought, चलो कहीं तो I can hold on to something. I can really hold on, because Guruji has given me a way how I can talk to him. Even if I don't speak any word, even if I just sit in silence, I can just come and do his darshan and go back. And I'm so glad to Guruji that in his body form, he told me that, and that has helped me so much, immensely. So that is the most beautiful way of Guruji giving me direction, how to let go of asking that I was used to for over a year. And he gave me everything at that time. I was getting used to, but I was getting detoured. My spiritual journey was different, and I was going the other way. And Guruji held my hand and put me to the right path. How, when he leaves his body, how I can still be connected to him, how I can feel his energy, how I can feel his ambience around. And when that happens, then more and more you feel like sitting there with him, because that's the only way. And if Guruji hadn't told me, मैं तो बिखर जाती, really बता रही हूँ, because I was so used to talking to Guruji all this time. So that is my biggest gratitude to Guruji, that he taught me the right way to connect with him in deep silence and in dhyan only. So I feel since the day Guruji had told me, mere se kuch nahi mangna, I have followed. Only Guruji knows. I have never asked for anything. He said, connect with me in dhyan. I try to spend whatever time Guruji I can do that, because Guruji only knows. And that is between Guruji and me. It has nothing to self-glorify or anything, but the path that Guruji had taught me in silence, connect with him, I feel I have slowly understood Guruji more in silence, especially after Guruji left his body. Because coming from Singapore, I used to just keep looking at Guruji. I was so connected to his body even. And when he became Nirvikar ho gaye, Sakar Roop se, you cannot see him. And I'm so glad he had showed that way, ki you can still see him, you can still feel him. So that is my, what has helped me is not asking anything. And it is very hard, especially for new Sangat. They don't understand. They keep asking the same questions. कि कैसे नहीं मांगो, अपने परिवार के लिए नहीं मांगेंगे, बच्चों के लिए नहीं मांगेंगे, तो कैसे होगा, मेरी जो बीमारियां हैं कौन दूर करेगा. जैसे जोशी आंटी ने कहा कि Guruji is a father and he knows everything what is right for people. And if there's a suffering in our life, there's also for a reason. And we all know the karmic effect by now, how it happens. So at that time, if we still are connected to Guruji, you will see, you will go beyond your body pain also. You will slowly kind of go to a different level, in the sense that unless you're connected to Guruji, it cannot happen. और Guruji कहते थे, direct connection बनाओ, मेरे लिए समय निकालो. Sometimes he used to get very upset with Sangat and he used to say, सब मेरे से मांगने आते हैं. And I was one of them too in the beginning. And I felt so small at that time. Ki that is true. That's why I come here to keep मांगोing Guruji. And Guruji when said, मुझसे मांगने आते हैं, मुझसे कोई मिलने नहीं आता है. So that was a big thing that Guruji at that time taught. And it's all, like I said, it's all Guru Kripa. Guruji जिसको जो समझाना चाहते हैं ना, वही समझ में आता है. गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या समझाया, वो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि maybe I was not aligned to go that direction, whichever way he wanted. So Guruji, it's all Guruji is doing. Whatever he would like Sangat to understand, he will teach them 100%. And even still he's doing that.
we only get to understand what Guruji really wants us to understand. But one thing, as you said, is our what we all as Sangat is make time for Guruji at least. Give some time for him to take away all our chattering or our body stuff and let him do his work. Give him some time. So that is how I understood Guruji, Mango Nahi, Mano, which is very hard, It's I'm sure you all will agree that it's a journey, and the progression and the pace of that progression is determined by Sahib. So, Auntie, to your point, if the new Sangat doesn't understand, I think it's okay, because we were at that stage maybe 25 years ago, and maybe still are, I don't know. And if I may be completely honest, I try not to ask Guruji for anything, but I'd be lying if I tell you that I don't catch myself secretly desiring for a few things. Desires creep up in my mind, and those desires come. And yes, there is this little realization that I don't have to ask Guruji, but वो जैसे कहते हैं भावनाएं creep up होती हैं. And two different satsangs that happened at two different stages in my life. So when Guruji was in his chola, Leela auntie would remember this satsang. I was a student, and मेरा economics का exam था. Now the theory of Karma Yoga will say कि तेरा पेपर था, तू गुरुजी के दरबार में क्या कर रही थी? You should have been studying. बट नहीं, मैं तो गुरुजी के दरबार में बैठी थी, और अगले दिन मेरा एग्जाम था. तो मेरे दिमाग में आया कि छुट्टी लेने से पहले बस मैं गुरुजी को इतना बोलूंगी कि गुरुजी मेरा एग्जाम है, और वो मेरे को आशीर्वाद देंगे तो शायद मैं पास हो जाऊं. इंटेंट मेरी ये थी कि चलो मैं आशीर्वाद लेकर जाती हूँ, एंड आई पास. एंड जब मैंने गुरुजी से बस इसका जिक्र किया, गुरुजी ने मेरे को मेरा एग्जाम का पेपर बता दिया. ही लिटरली गेव मी क्वेश्चंस कि ये आएगा, नॉट इन दैट वे कि मैं तेरे को क्वेश्चंस बता रहा हूँ. ही स्टार्टेड आस्किंग, एंड आई डोंट रिमेंबर कौन सी आंटी उनको पास में बैठ के घुट रही थी. शी सेड, बेटा नोट करो, ये आपको आपका पेपर बता रहे हैं. So I initiated that conversation, and I had an agenda behind that conversation. The second part, which happened a couple years later, was when I decided to give Guruji a box of chocolates. There was a desire tied to that chocolates. And yes, my desire was very small. My desire was based on what I could think and process at that point in time. And I wanted a piece from that box. कि गुरुजी को मैं अच्छी सी इंपोर्टेड चॉकलेट्स दूंगी, गुरुजी खोलेंगे, गुरुजी बॉक्स अपने पास रख लेंगे, और एक पीस मुझे भी मिल जाएगा. एंड टू मी दैट वाज बी ऑल एंड ऑल. बट गुरुजी हैड समथिंग बिगर टू गिव मी, एंड ही गेव द बॉक्स टू रोमा आंटी, बट ही गेव हिज जुत्ती प्रसाद टू मी. सो हम क्या सोचते हैं और वो देने के लिए क्या बैठे हैं. But the point I'm making is that because we are humans and we are working as designed, from time to time, no matter how progressive or elevated we may feel or may not feel, we will find those desires creeping up within us, because that's part of our mental makeup. That's part of our DNA. Would you agree? I would agree to that. And like you said, apna direct connection banao, and it's all about intent. Guruji used to say, "Main thoda bhav dikhna." So for me, Guruji is my best friend, and he's my father figure. And like you said, Aarti, of course, we cannot, as a human being, be without desire. And it's a journey of learning and loving and growing. But our hearts, the nature of the heart is to have desire. And it might be a small, I would say, kind of something that does not interfere in anyone's karma or your karma. And then he grants that desire, because it's a kind of a harmless desire. It might be a desire of having as trivial as eating something. कि मेरा आज pizza दिल कर रहा है, and suddenly the pizza manifests from somewhere because your friend says, "Oh, let's go for pizza or something." So you say, "Guruji, आज pizza दिल कर रहा है," because our conversation in our head is constantly with Guruji. It's like, even if we're not in a satsang and we're going about daily lives, we are still talking to Guruji all the time. Hi Guruji, aaj dil kar raha hai pizza khane ka. Guruji, aaj Goa dil kar raha hai. For example, I just got back from Dubai on Monday night, and I've been out of India for 5 months.
So my desire, as soon as I landed in Delhi, is मुझे गोवा जाने का दिल कर रहा है, पर कौन जाएगा? एंड मैं भी क्यों जाने की सोच रही हूँ जब मैं अभी तो आई हूँ इंडिया 5 महीने बाद. And then one of my friends, you have to hear this is such an innocent thing. Thursday, my friend says, right, Monday night. Thursday, she said, come, let's go for lunch. बातों बातों में मैंने बोला है मेरा गोवा जाने को बहुत मन कर रहा है. वो हंसी कि तू अभी तो आई है इंडिया. मैं कहा बहुत मन कर रहा है. मैं गुरुजी को बोलती जाऊं, गुरुजी वापस दुबई भेजने से पहले मुझे गोवा भेज देना. मेरी फ्रेंड बोली अगर जाना है तो कल जा सकते हैं, because I'm very busy after that. Let's go for a week and we leave tomorrow. 2 सेकंड के लिए हेजिटेशन हुई, पर मैंने गुरुजी से मांगा तो गुरुजी ने ला उन्हें देता था. नो who to let that? Then he's presented the opportunity to me. Now it's up to me to grab that opportunity or to kind of, push it away. I grabbed it and here I am in Goa. I may be still jet lagged. I may still be tired, but I'm here because I asked for it and I got it. It's a harmless desire which can easily be fulfilled. किसी का कर्म नहीं खराब हो रहा इसमें, मेरा भी नहीं हो रहा. So Guruji is too kind. He's so kind. We are his children. Like you said, Aarti, there's a part of this which is very practical. If we don't ask Guruji, who do we ask? अच्छा मांगो, मतलब मांगने तो अच्छा innocent चीजें मांग लो. गुरुजी मेरा दिल कर रहा है यहाँ जाने को, ये खाने को, it's okay, ये पहनने को, it's okay. बच्चा बन जाओ. बच्चों में कोई ईगो नहीं होती. मांग ही रहे हैं ना innocently. किससे मांगेंगे? तो ठीक है. अपने बस be childlike. Guruji is God loving, not God fearing. डरना नहीं है. मांग के भी डरांगे तो फिर क्या फायदा? मांगो मतलब ऐसे बड़ी चीजें ना मांगो जिससे आपके कर्म खराब हो रहे हैं या किसी का नुकसान हो रहा है या आपका भला नहीं हो रहा. लॉन्ग गुरुजी कहंदे सी मैं तो दीवार तक नजर आंदा है, मैनू बहुत अगे तक नजर आंदा है. See, he has an infinite vision, whereas we have a myopic vision. So मैं ये बोल सकती, मतलब दोनों बच्चे मेरे दुबई रहते हैं, वो नहीं मैं कभी मांगती कि गुरुजी मुझे भी शिफ्ट कर दो दुबई. Maybe it's not good for me. You understand? So I never asked for the big moves, the big, game changers. I just say मुझे पिज्जा खाने को दिल कर रहा है या गोवा जाने को दिल कर रहा है. You know? like a relentless child. इस देंगे मुझे शायद ना अच्छा हो मेरे लिए, तो मैं नहीं मांगती मुझे यहाँ सेटल होना है या वहाँ सेटल होना है. Let me be a nomad that I am. Let me be the traveler that I am. जब तक हिम्मत है. It is so beautiful to hear that because, I experience that, like we have, most of us have iPhones, right? And iPhone में अगर हम कुछ बात करते हैं किसी के थ्रू, iPhone सुनता है और फिर आपको वही सब कुछ आने लगता है. The same way I have thought about this कि गुरुजी से वैसे ही होती है हम लोगों की बात. हम सोचते हैं कि जैसे those things are not mangoing. That is not mangoing. Mangoing जब हम material things और ये सब मांगते हैं. That's what, yeah. These things are so innocent, and that should always be. We are alive. We should be alive. We should be enjoying. Why not? अगर हमें एक बार मैं बताती हूँ मेरा कितना funny experience था. Guruji is so humorous and he helps. I was going for some Christmas event. So, I went to a store and I said, oh my God, itne महंगे, I don't want to buy something so expensive. And I'm talking to Guruji. Guruji is listening all the time. And I look at this shirt and it was very, very expensive, but it was Christmas color with glitter and all that. I thought this is perfect, but it is very expensive. I let it go. And can you believe, as I'm moving to the next rack, wahan pe wahi shirt, it was 70% off. Same shirt. You're lucky. How is it possible? So this is how Guruji innocent desires, as you said, when your karmic account is not tied up with something, you're not doing anything wrong for somebody. Yes. These are just innocent, like childlike thing. You're thinking, oh my God, because we are always attuned to Guruji.
oh, ये तो बहुत महंगी गुरुजी, I'm not going to spend so much money on that. And Yeah. you walk away, and all of a sudden, how did it manifest? The same, brand name stuff, which is 70, it is not possible. Nothing else was there on sale. So I picked it up and I said, oh my God, I really bought it, and I brought it and I wore it. And this is how Guruji does it. So I can relate to that, and we all do that, which is fine. These are innocent desires. Like a persistent child, I think everybody on this forum knows that I've been telling Guruji, I want to have a spiritual retreat with you, for you, about you, with all these beautiful souls, and Guruji has to make it happen. So here he is. So should we have part 2 now, or because it's 10 o'clock online hour? I just want to add one thing here. Sure, Here sure. comes acceptance and consequences. When we ask to Guruji, like a child also, very innocently, but if we don't get that thing, are we ready for the consequences? Or we start blaming Guruji that, oh, Guruji, we wanted this. No, acceptance comes here, especially for new Sangat. They have a bucket list, as we all had. But again, the acceptance part is very, very important, because the consequences will be there. You have put your desire on table, Guruji ke samne. What if you don't receive that? You should be ready to accept the consequences. Why Guruji is not giving you that? Yes, yes, well said. Without a doubt. Well- And I just one question, Anita Auntie, because it's top of mind, and I'm sure everybody's been in this situation. A lot of times, we get this outpour from new Sangat about questions pertaining to their struggles. I do believe in this one line, Nanak Dukhiya Sab Sansar. And they'll reach out with a lot of expectation, and there's a lot of pain and sadness in their message that, oh, auntie, my daughter is suffering from this, or I'm going through this, yeah, meko depression hai, anxiety hai. And I just want a perspective. How should we respond to that? Because I feel like, of course, there is this urge to help, but we also have to realize that we are helpless. We're not God. And just because we're so-called old Sangat, I think that doesn't mean that our cup is unlimited, or we have the ability to heal anybody or make anybody feel better, because ultimately Guruji is the doer. But how do you respond to something like this? Because it's not like you don't want to empathize and don't want to respond, but you also know that there's nothing that you can do because we are mere mortals. How do you handle such situations, Anita Auntie? So it comes many times on our doorstep. And I think, again, it comes back to Guruji's teachings only. कि मैं तोनु मंत्र जाप दे के जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई. जरा मंत्र है ना, that is going to give us the strength and the courage and the wisdom, I would say, to deal with our issues. You see, 97, 98, Guruji ने पहले ही बोल दिया था कि अगे जाके बड़ा मारा टाइम आना है. बारिश होनी है, कैंसर, डिवोर्स ते डिप्रेशन दी. ते इन्ना मारा टाइम आना है, सिर्फ रब दा नाम ही काम आना है, रब है ते सब है ना. तो आई थिंक हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो गुरुजी के सॉल्यूशंस है वो अगर हम फॉलो करें. यू सी पीपल आर, दे वांट शॉर्टकट्स, दे वांट टू, कि मतलब क्या करें. वो कोई बैठ के पाठ नहीं करना चाहता, कोई बैठ के मंत्र जाप ध्यान लगा के नहीं करना चाहता. ध्यान लगाना बहुत जरूरी है. ध्यान और ज्ञान ही हमारा काम आएगा अंत में. गुरुजी used to say ना, सब कुछ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, नाम दी कमाई. नाम क्या है? नाम दी कमाई क्यों ਹੁੰਦੀ है? बैठ के एक्चुअली मंत्र जाप करो, कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली. उससे हमारी वाइब्रेशन लिफ्ट होती है. सो देन आवर प्रॉब्लम्स डिमिनिश. प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाएंगे. जब तक सांस है तब तक आस भी है, और अपने प्रॉब्लम्स भी रहती रहेंगी अंत तक, राइट? बट हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, our perspective, और it shifts, और हम कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ जाता है हमारा. सो पाठ करना, सत्संग जाना, गुरबानी सुननी, सेवा करना, सत्संग, सेवा, सिमरन, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान, ये सब चीजें जो गुरुजी ने हमें दे के गए ना, ये गिफ्ट है. गिफ्ट फॉर लिविंग आवर बेस्ट लाइव्स. प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगे. आज बारिश हो रही है हर चीज की, दुनिया आग लगी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं हर जगह, वॉर्स हो रही हैं. तो ये इससे हमारा टाइम क्या हो सकता है? आज भी एक नई वॉर शुरू हो गई है. सो ये आग लगी हुई है, हमें कैसे अपने आप को कूल रखना है,
बबल में रख लें, रैप करना विद दिस स्पिरिचुअलिटी, विद दिस लव ऑफ अवर गुरु, एंड संगत जोड़ते रहो। जब हम संगत के लिए बन जाते हैं ना, सत्संग करते हैं या जाते हैं सत्संग शेयर करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स हम डिमिनिश हो जाती है, हम भूल ही जाते हैं। कोई बड़े मंदिर जाता है, बर्तन धो रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, हम ब्लैंक ही होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नहीं, वो कलेक्टिवली हम संगत के गुरु जी टू से कि अपनी फैमिली को लो ज्यादा, ਤੁਹਾਡਾ गुरु परिवार ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करेगा और काम आएगा, है ना। जब हम गुरु परिवार में समा जाते हैं, सचमुच उनके लिए बन जाते हैं और हम गुरु जी के लिए ही जीते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप डिमिनिश हो जाती है। सत्संग, सेवा, सिमरन, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान। गुरु जी ने दे दिया सोल्यूशन, पर कोई सोल्यूशन अपनाना नहीं चाहते, एम्ब्रेस नहीं करना चाहता, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ क्विक फिक्स। At the press of a button, I'm getting that pizza. At the press of a button, I'm getting that ticket to Goa. Everything is instant coffee or instant tea. तो instant solution भी लोगों को चाहिए। Spiritual journey is a journey of cutting our karmas and creating new karmas. So it's a very arduous journey. तभी जाते हैं हम, impatient हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, कहते हो गुरुजी आप हो, मैं तो अभी भी बीमार हूँ, अभी भी मेरे इम्यूनिटी लो है। पर ये हमारी कार्मिक जर्नी है, चलते जाओ, चलती का नाम गाड़ी, पर गुरुजी को याद करते करते। गुरुजी कहते थे ना लीला आंटी, 2 टाइप की ब्लेसिंग्स होती हैं, एक इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, राइट? He used to say that. Usha aunty will also. अभी आप वही गुरुजी कहते थे ना कि यहाँ दिल्ली वालों को तो चाहिए ये कौन सी यहाँ जो एक होती है वो चाहिए, एलोपैथिक वाली ये संगत है। और जो होम्योपैथिक है वो थोड़ा टाइम लगा के लेता है, वो नहीं चाहिए, क्विक चाहिए उनको कि भैया वो करो, जल्दी करो, गुरुजी ये दे और हमारा काम फटाफट हो। तो ऐसे थोड़ी गुरुजी से जुड़ा जाता है। कोई हमेशा उषा आंटी गया तो वो हमेशा ही ध्यान में बैठो, कुछ समय गुरुजी के लिए निकालो, उनसे जुड़ो, कैसे उनसे कनेक्ट करना है। और गुरुजी की जो मेहर की बरसात है वो तो थ्रू आउट है, थ्रू आउट वो आप रिसीव करने वाले बनिए, बस वो है सबसे जरूरी चीज। तो और आप ही आंटी आपने सही बोला है, इतना सही बोला है, बहुत सही। क्योंकि जब भी कोई भी ध्यान में बैठता है, हम अपने आप उस समय, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है, महादेव ने कहा है कि जब तुम ध्यान में बैठते हो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कार्मिक कैसे कटते हैं, उसके अलावा जो शरीर में बीमारियां होती हैं वो मुझे पता नहीं है। वो 6 टाइम अब जब शिव पुराण पढ़ रहे हैं उसमें मैंने पढ़ा ये लाइन, समटाइम वी मिस इट, नो मैटर, तभी गुरुजी कहते थे रोज एक अध्याय पढ़ो। So 6 time when I'm reading, I came across this line that I had missed it 5 times that we had read. लाइन दिखाते हैं गुरुजी। Yes, ध्यान के लिए उन्होंने बताया कि ध्यान, क्योंकि वो तो योगेश्वर है ना, वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ध्यान में बैठने से तुम्हारे जो जितने तुम्हारी बीमारियां भी हैं वो भी छिन्न हो जाती हैं। तो एज अनीता हैज सेड, अनीता आंटी जस्ट मेंशन कि लोगों के पास कलयुग में आजकल टाइम नहीं है ना, लोग एफर्ट नहीं करना चाहते, कि उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मन तो स्थिर नहीं रहता है, उसको 40 दिन चाहिए आपको स्थिर होने के लिए। ऐसे थोड़ी ना कि आप बैठेंगे ध्यान लग जाएगा। इट टेक्स सम टाइम, गिव सम टाइम। जैसे कुछ भी आप टैलेंट कुछ करना चाहते हो सीखने के लिए, यू गिव योरसेल्फ टाइम कि हम इतना टाइम रोज रोज करेंगे तब फिर हम सीखेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो तो तुरंत थोड़ी ना हम बजा सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे गुरुजी कहते थे रोज मेरे लिए समय निकालो, और अगर हम उसको अगर अपनी लाइफ को ठीक से जीना चाहते हैं, या हम अपने कार्मिक अकाउंट को कम करना चाहते हैं, या अपनी बीमारियां शरीर की पेन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो शॉर्टकट। आप जितना भी जो भी करो, क्योंकि
आजकल तो यहाँ चारों तरफ वर्ल्ड में डॉक्टर्स कह रहे हैं meditation is the only way, because mental also plays a big part on the body. Until we sit, like Guruji has said, it is very hard. So अब दुनिया में इसकी भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, सब जगह हो रहा है, स्कूल्स में हो रहे हैं. नेक्स्ट जनरेशन जो है इतनी स्ट्रेस्ड आउट है, बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं, और जब तक हम उनको सिखाएंगे नहीं, बजाय हम उनको सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स बनाने के लिए सोचें या बिजनेसमैन, सबसे पहले हर परिवार में माँ का बहुत आवश्यक है कि उनको बच्चों को समझाना. एक तो स्थिर बैठो, जब माइंड और बॉडी आपकी स्थिर होती है, आपका वैसे ही सब कुछ अलाइन हो जाता है, एंड यू बिकम मोर इफेक्टिव. आप में ऊर्जा जो होती है वो डिवाइन ऊर्जा कहाँ से आती है? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड. I mean, whoever, like Aarti, coming to your question, I'm sorry, I'm just talking without my turn, but it is like so many people in Sangat, I see there's so much suffering. New Sangat aati hai, the same question, कि मैं तो गुरुजी से अभी जुड़ी हूँ, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम, इतनी शरीर में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये है, वो है. I just tell them, I said, it is between you and Guru. Guru has showed you the way. Satsang, Simran, and Seva, like Anita Aunty had mentioned. The 3S is very important. And if you leave it, then you start from square one. So you have come up till now. Keep continuing and talk to Guruji, make a direct connection. वो तो 1 मिनट में अगर हमारे लिए अच्छा होगा, वो तुरंत ठीक कर देते हैं. So maybe he's leaving 10%, and we have to go through that pain for some reason. And that's how it, all of a sudden, how people change. So many new Sangat has overcome that, and they're still connected to Guruji. They still come to Sangat even if they have problems. It doesn't matter. So when you leave it to Guruji to handle it, he handles it his way. As you said, we are nothing. We just are there to show कि ये गुरुजी हैं और इनसे तुम अपना connection बनाओ. And we are nothing. We are zero. And when he does his magic, everything happens. Yeah, but that's a question that very true. And I would like to remember that कि गुरुजी said, गुरुजी ने एक बार किसी आंटी को बोला कि वो आपस में बैठ के बातें कर रही थी. गुरुजी ने कहा कि क्यों बातें कर रही थी? उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी मुझे. तो गुरुजी ने कहा किसी की प्रॉब्लम मत सुनो, उनको बोलो सीधे गुरुजी से बात करो. So that's what I do. When someone comes to me, I said, here's Guruji, here's you. Okay, but it's between you and Guruji. I can only tell you कि what I saw, what I felt, but eventually it's your journey. As a counselor also in my clinic, I used to keep a copy of Light of Divinity. And when people used to come to me with so many problems, depression, anxiety, everything, psychosomatic illnesses, I used to counsel them. And after that, धीरे से वो कॉपी निकाल के, you know what, हमारे गुरुजी है, ये उनकी बुक है, you want me to read a satsang for you? That used to work like magic. Magic. This healing only Guruji can bless. तो गुरुजी ने जो कहा ना कि किसी की प्रॉब्लम मत सुनो, उनको बोलो मेरे से कनेक्ट करें, मेरे पास भेजो, मेरे से बात करें. इवन फोन पे किसी की प्रॉब्लम्स मत सुनो, उनको बोलो मुझसे कनेक्ट करें. That's what, yeah, our mantra should be, And as not to throw a wrench into this, I think part 2 to this question in continuation is that if Guruji is the doer and सब कुछ गुरुजी ही करते हैं और सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, then why should I be accountable for my karmas? And here you stir the whole, pot of, Correct. I don't support all. Yeah, I think various lives. Sorry, guys, to interrupt, but it's 1 hour 17 minutes, and I think, Auntie, one last thing. I think the biggest takeaway for us, which sums up everything, in my view here, is that it's great to be attending satsangs and sitting in dhyan, but I think something bigger and better is also, like you said, enabling everybody else around you and showing them that path. Enable people to do satsang in their own homes. And show them the way to connect to Guruji. And I think that's the only way to find salvation in a world that's burning around us. Absolutely. Well, it's been a pleasure to be here. And I think hopefully we'll have a part 2 at some point. But we must call it a day.
It's otherwise it gets extremely long for the listener. Short में, Thank- short and Thank- yes, precise. Jai Guruji, thank you. God bless. Thank you, Om Namah. Prana. Jai Guruji. So much Jai Guruji Aunty. to be part of this group. Thank you so much, Anita Auntie and Usha Auntie and Archana. Thank you so much, Auntie. Thank you, Auntie. Thank you. Such a Thank you. pleasure to see you all. Thank you. Thank you, Shanti. Thanks. अच्छा लगा। God bless.